Hello, curious people. So yesterday, my qualifier exam was there, कल exam थी, and it was good. Hope so. And I hope आपकी भी एग्ज़ाम अच्छी गई होगी. Sorry, I couldn't upload the fourth week and third week some two subject I think revision. I'm sorry to myself because I committed to upload but I couldn't because practice PYQs ख़त्म ही नहीं हो रहे थे and I was just practicing and watching the lectures again if I couldn't get the concept. And on 22 we have to submit again fifth week's assignment, so it's full of a lot of work to do. And हम फ्री नहीं है बिल्कुल भी. And I talked to many people कि they are traveled so long with train bus to go to their exam center. Truly, this degree tests you from every angle. Like as a person, as a student, from every angle, this degree tests you. After all, it's IITM. Yeah, right. It has the reputation to be maintained, so it will test you from every angle. And मज़ा आने वाला है बिकॉज श्वेता लव चैलेंजेस एंड बहुत मज़ा आने वाला है. होप सो आई गेट इन टू दिस प्रोग्राम with this qualifier exam. I given my best yesterday but can't say because each question is for 4 marks, and if if only one option goes wrong, the whole answer is your wrong, and the 4 marks are gone and your percentage will drop down, and it will just not allow you to enter this program. So it's rigorous. It is, the questions were easy, but a little mistake, a silly mistake can make everything a mess. So I hope I enter into this program. I think in today or tomorrow the results will be released on portal or maybe through email. Everyone will get their results. Hope everyone clears this qualifier exam. Whoever have put in the effort that is required. कुछ लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं. अच्छी गंदी हो गई हिंदी मेरी. ओके, बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं. स्पेशली आई थिंक majority science students, and especially who are given JE, because they think this is not a degree of their level, because it's a online degree after all. And IITM has continuously telling that we have not compromised on their academics or any kind of things which will make this degree a low quality. They have maintained it. Still people think it's not worth it. Going to a tier 3 college on campus program is more preferred than this degree. I don't want to criticize them. They have their own opinion, as I have my own opinion. They also have their own opinion. There is no conflict in it. Good. But I think they have not done enough research. And that's the problem. Like,
majority people don't do research about, and not just about this degree, of anything. Let it be any job offer or anything which in which you have to make a decision. So they don't make a research, they just jump into it. बस हाँ, एक बार देखते हैं, अच्छा ठीक है, ओपिनियन बना लिया और डाल दो, खत्म. लाइक एंड इन दिस जनरेशन इट इज़ लॉट मोर, बिकॉज हम क्या करते हैं, ट्विटर पे किसी ने पोस्ट कर दिया, देखा, जाना नहीं, परखा नहीं, उस एक बंदे का ओपिनियन पढ़ लिया, एंड ऑन दैट बेसिस वी मेक आवर ओन ओपिनियन एंड पोस्ट इट without thinking for a second, without pausing, बिना सोचे, बिना समझे, we just jump into anything. That's a very wrong thing. Never do that. In any aspect, never do that. Have your own research which is based on actual data, not hypothetical, your imagination or any other's imagination. Not imagination, actual data. Okay, your decision should be based on purely data, because data never lies. This line लिख लो, मतलब कहीं तो छाप दो. Data never lies. Okay, in I think last year's convocation, IITM, every convocation, IITM shows their students enrollment data, what's the completion, everything like related to the degree. Every data is displayed, uh, how which category students are there, how many female, everything is displayed in the convocation. And in that I noticed one interesting thing. People who are working professional or doing this degree as a standalone, their proportion is much greater. Success, like success means completing the degree. Okay, so their completion rate is higher than those who do dual degree. Now I don't know the exact reason, there are many factors to it. Like you can't just tell one factor, there are many factors, but it's my insight. Okay, and this is my opinion. Have your own research, it's just my opinion. And after talking to many people also, I have reached to this conclusion that those people are not doing this degree seriously. They are taking this degree as an option, as a second option. हाँ ये तो है, मतलब हाँ ठीक है, ये तो साइड में कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी, इट्स जस्ट अ ऑप्शन, जस्ट टू हैव दैट IIT का टैग. जस्ट अ ऑप्शन. क्या है ना, मैं IIT से कुछ पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, जस्ट अ टैग, यू नो. मैं नहीं कह रही कि डुअल डिग्री करना गलत है या फिर इट्स नॉट डूएबल. नो, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स हु हैव डन दिस एक्सलेंटली, एंड IITM पोस्ट दैट their experiences on LinkedIn and YouTube, everywhere. They share their experience. They have done it. Many people have done it, but majority cannot do it. Why? Because they don't prioritize it. Okay, see, they don't prioritize it because they think it's not so worth it of their time. Not worth it of their time. This is wrong. I'm telling you, this academics is, I mean, it's amazing. Like if you want to excel, you can choose this without even thinking. Okay, but do your research. Okay, ऐसा नहीं कि श्वेता बोल रही है तो बस, और वैसे भी मेरी कौन सुनने वाला है. I'm not in that level to so that people will listen me, but one day I will be. It's my commitment.
Okay, so coming back, it's amazing. This degree is amazing, and I want to do this now. There is no step back. Like, I literally want to do this. And secondly, I want to do this because it's convenient, it's from home. हाँ, लाइक मुझे मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है क्योंकि घर में नेट मिलता है और कंप्यूटर है। मुझे ये दोनों चीज़ मिल गई ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाहर ये नहीं मिलेगा। इफ़ आई गो आउट टू एनी कॉलेज इन माई सिटी, उनके लैब्स तो होंगे, पर क्या वो कंप्यूटर मैं यूज़ कर पाऊँगी? लाइक द कंप्यूटर इन माई होम, आई यूज़ my computer in my home? No. How? Never. And they will not have the same level of hardware and all. पता नहीं कितना पुराना होगा, मतलब आई डोंट टेक एनी गारंटी। वो मिलेगा भी नहीं मुझको, वो भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड ऑल। और इंटरनेट तो भूल ही जाओ, you can't get that. It's available only in my home, so I'm very happy doing this. May, like, it's very clear to me now that I really want to do this after yesterday's exam. It was amazing experience, and there are no dedicated videos on YouTube who will explain how the qualifier exam is. Everyone says it's a computer based exam, ज़्यादा कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, but I'll tell you how it was, okay, from starting, and you make you visualize thing. So they told कि report the venue at 1 o'clock. So I reached there at 1 o'clock, and I waited outside for half an hour because it was so early. So till 1:30 I waited outside, and after that I went into, and the center was really good. Like the security and the checking, everything was great. You have to carry your hall ticket, ID proof, and pen if you want. If like solve तो करना पड़ेगा, तो इसलिए एक पेन, और if you want you can take your water. So that are the only things you will require inside the exam center. And वो क्या है कि they are tying up with some computer based exam center. So mine was TCS ION, and majority वही होता है, मतलब हर सिटी में होता है वो। सो दे मेक टाइप विद, एंड वहाँ पे लैब्स होती हैं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, क्यूबिकल्स होते हैं, सेम लाइक यू। आई फेल्ट लाइक आई वेंट इनटू ऑफिस, एंड अभी मुझे काम करना पड़ेगा। सेम फीलिंग आई वेंट थ्रू। देयर आर क्यूबिकल्स, मैनी क्यूबिकल्स देयर, एंड और बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, और ऐसे क्यूबिकल्स थे, एंड देयर आर कंप्यूटर्स। और उन्होंने पहले ही वो सब कुछ सेट कर दिया था, सर्वर से कनेक्टेड होता है वो IITM के, उनके सर्वर से वो कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड होता है। सो they operate from, I think, the main server, and till 2 o'clock the screen will be like, आपका राइट कॉर्नर में फ़ोटो दिखेगा, वहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी, और IITM स्क्रीन में और कुछ नहीं होगा, उस कंप्यूटर में और कुछ नहीं होगा। आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर दिखेगा, और पासवर्ड आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। योर डेट ऑफ बर्थ इज़ योर पासवर्ड, वो एंटर करना पड़ता है। वो भी आप तभी एंटर कर सकते हैं जब 150 करेक्ट एक्यूरेट, जब 150 होगा इट विल आस्क यू प्रॉपर नाउ यू कैन साइन इन, तो तभी साइन इन कर सकते हैं। एंड देन यू साइन इन, देन इट्स गिव्स यू ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस कि हाउ, एंड रीड all of those things one by one patiently,
they will give you 10 minutes before, like 1:50 को वो साइन इन होता है, and you just read that carefully, and then वो तभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट करने नहीं देता. At accurately at 2 o'clock it will say you, now you can begin your exam and you can begin there. फिर पहले तो CT आया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, देन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स इस सीक्वेंस में था. सो आई अटेम्प्टेड इन सीक्वेंस ओनली, एंड द क्वेश्चनिंग पार्ट इट वाज सेम, लाइक योर ग्रेडेड असाइनमेंट कैसे होता है ना, यू हैव टू टेक सेम वही होता है. और जो कैलकुलेटर होता है वो वहाँ होता है, एक आइकॉन कैलकुलेटर का साइड में राइट और आपके फ़ोटो के बाजू में ही एक छोटा सा आइकॉन होता है कैलकुलेटर का. यू हैव टू क्लिक दैट एंड सॉरी यू विल गेट दैट कैलकुलेटर. वो हॉल टिकट में भी उसका लिंक होता है, सो यू कैन क्लिक एंड प्रैक्टिस एट होम, एंड इट वॉज वेरी गुड. एंड at 3:30 the submit button will get मतलब वो तब आप सबमिट कर सकते हो. आफ्टर 3:30 ओनली, बिफोर दैट यू कैन नॉट. टिल देन यू हैव टू सिट दैट. आई वॉज सिटिंग टिल 5:30. It was the exam was from 2 to 6, so I was sitting there till 5:30, and yeah, it was amazing. सेम ही होता है, एंड आई थिंक जेई से आसान ही होता है, या उससे तो आसान ही होता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है वो. क्वेश्चंस आर सुपर इजी, क्वेश्चंस आर रियली इजी, बट थोड़ा सा अजीब लगता है when you are never attempted any of your exam on computer. Like this was my first experience. मैंने स्कूल के एग्ज़ाम छोड़ के कोई बाहर के एग्ज़ाम कभी नहीं दी. नो एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए मैंने. जस्ट 2 बोर्ड्स दिए हैं, 10th एंड 12th. और कोई अलग एग्ज़ाम कभी नहीं दिए. हाँ, छोटे मोटे क्विज होते हैं वो दिए हैं, लेकिन नॉट ऐसे इंस्टीट्यूशनल. No, never. I never given such exam, and this was my first experience, and it was amazing. Amazing. I really, really, really hope that I get into this program. Like, I just want to do this. It's amazing, and it's worth it. So, hope those who have put in the effort of 1 month into that qualify exam will qualify this. I really hope and I really wish. इतना ही कर सकती हूँ. 2 दिन के बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ ही जाएगा. I'll share with you also what happened. And what if I don't qualify? Well, I don't know. I don't know. I have not planned कि नहीं हुआ तो क्या होगा. We'll see what happens. शायद पता नहीं यार, मैंने प्लान ही नहीं किया कि नहीं हुआ. I just planned हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा. I haven't planned. Okay, bye. I have to do my 5th week's assignment also. 2 दिन का डेडलाइन है, 22 में सबमिट करना. एंड I wish I entered this program. आप भी प्रे कीजिए, and I would love to hear your experience of your exam center, how you went there, like your journey and all. Please let me know in the comment section. I will personally reply and talk with you, and we will learn together. Bye.